पढ़ा टे रिविजन हो गोटे प्रकार फिगर देखिए हार्टर गोटे सिस्टम यहाँ हूँ पल्मोनारी आर्टरी दीपट सैड्रे गोटे पटे पल्मोनारी भेन यहाँ ये पल्मोनारी भेन्स दुटा ये दुटा सेमिलुनार भाल्व रही एपटे आर्टरी भेंट्रिकुलर भाल्व रही भाल्व एपटे भी रही राइट एपटे लेफ्ट भेंट्रिकल एपटे राइट भेंट्रिकल यहाँ हूँ पोस्टेरियर भेना कवा यहाँ हूँ ह्यूमन हार्ट एंड रिसी फंक्शनिंग साइज हूँ के ह्यूमन हार्ट 12 into 9 cm और तार वेट हूँ 300 ग्राम और enclosed in a top 2 layer connective tissue sac 2 layer connective tissue sac भीतर से enclosed होकर रहता है पेरिकार्डियम जोटा कहुए सैक has 4 chamber रहता है 2 upper smaller article 2 lower 2 larger ventricle smaller auricle और 2 larger ventricle ऊपर आम देखिए ना राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल आर्टरी देखिए एट्रियम लेफ्ट एट्रियम तापर द राइट एट्रिकल रिसीव 2 लार्ज भेन सुपेरियर भेना कवा आउ गोटे इनफेरियर भेना कवा द राइट ऑरिकल ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल यहाँ हूँ राइट वेंट्रिकल एपटे हूँ राइट आर्टियम ओपन होता है राइट वेंट्रिकल ये सुपरनोवा हूँ कैलकुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द होल बॉडी यहाँ सुपेरियर भेना कवा यहाँ हूँ राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल आर्टियम वेंट्रिकल को जाऊँगी ब्लडटा सर्कुलेट होगी एपटे पुणी राइट वेंट्रिकल पल्मोनारी आर्टरी को आसुची पल्मोनारी आर्टरी लंग्स को आसुची लंग्स पुणी पल्मोनारी प्यूरिफाइड होगी पल्मोनारी भेन को जाऊँगी प्यूरिफाइड क्या यूज कौटा को सब्सटेंस यूज करके ना ऑक्सीजन प्रेजेंस रे गोटा प्यूरिफाई हुए ब्लडटा को पुणी प्यूरिफाइड ब्लडटा क्या दे फ्लो करे भेन को फ्लो करे पल्मोनारी भेन तापर लेफ्ट एट्रियम को जाए तापर लेफ्ट वेंट्रिकल को जाए तापर आवर्टा को जाए तापर आवर्टारू पुणी 2 भाग हो जाए कौटा कैपिलरी इन हेड रिजन को जाए और कैपिलरी इन ब्लड ऑर्गन सॉरी बॉडी ऑर्गन को जाए गोटे ब्रेन को जाए हेड रिजन जो कैपिलरीज को जो साइकिल चले यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर शो कर पार्टा जितक सिस्टम चलला से हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन तादर इनवल्व ना तल पार्टा ऑक्सीजन इनवल्व अच्छे मैंने प्यूरिफाइड हो गला जो प्यूरिफाइड है ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो तापर जो सिस्टम गुड़ा है ब्रेन पर्यंत गला बॉडी ऑर्गन पर्यंत ब्लडटा आसला है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तापर गला राइट वेंट्रिकल gives of a large blood vessel which carries deoxygenated blood to the lungs. This blood vessel is guarded by pulmonary or semilunar valve to prevent backflow of blood. सेमिलुनार भाल्व गोटे रही है जोटा पल्मोनारी भाल्व बा सेमिलुनार भाल्व बोली ताको कहा जाए जोटा कि प्रिवेंट करे ब्लडटा बैक को फ्लो न करिकी फॉरवर्ड फ्लो हम जो पुणी पल्मोनारी भेन को जो पल्मोनारी आर्टरी की पुणी फेरी जीव काले से गोटे भाल्व रही है सेटा को प्रोटेक्ट करे मैंने रोके बैकवर्ड जावाई रोके तापर ब्लड अगेन रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स इन द लेफ्ट ऑरिकल now the blood is oxygenated the left auricle open into left ventricle through a mitral bicuspid valve द्वारा ओपन होगी जोटा ऑरिकल लेफ्ट ये को जाए तापर कौन हुए ना फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल द ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी through a large blood vessel called aorta. This is again guarded by aortic or semilunar valve to prevent backflow of blood. To pump out blood, the heart chamber undergo alternate contraction called systole and relaxation called diastole. Systole, diastole, heart रो जो पंपिंग हुए
ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିନି ପ୍ରେସର୍ କେତେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ଆଉ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ହାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପମ୍ପିଂ ହୁଏ ତାପରେ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ପମ୍ପ ଆଉଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଚାମ୍ବରରେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟୋଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଷ୍ଟୋଲ୍ ତାପରେ ରେଗୁଲାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସିଷ୍ଟୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଷ୍ଟୋଲ୍ causes the heart sound lob and dop लब डप जो हार्ट हमरे ईसीजी करेचे जेते पड़े इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो से साउंडटा तार सेमती आसो कंप्यूटर आप शुणी पारे तो साउंडटा को डिटेक्ट करे लुप डुप साउंड loop is the produced by the closing of tricuspid and bicuspid valve while dup is produced by the closing of semilunar valve. Our heartbeat is myogenic in nature, that is it is initiated by a patch of modified heart muscles itself without requiring an external stimulation. This patch is sino-auricular node which is called the pacemaker. Normal heartbeat is 72 per minute beats per minute. न्यूबॉर्न हार्टबीट टिके फास्टर थाए adult अपेक्षा जोटा कि 70 ରୁ 190 beats per minute थाए. The heart is also a muscle, so it needs a fresh supply of oxygen and nutrient too. After the blood leaves the heart through the aortic valve, two sets of arteries bring oxygenated blood to feed the heart muscle. They are the coronary arteries. Blockage of any of these arteries can cause a heart attack. ହେଲା ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ଲକେଜ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କହୁଛେ. ମାୟୋକାର୍ଡ଼ିଆଲ୍ ଇନଫାର୍କ୍ସନ୍ or acute myocardial infarction or damage to the muscle of the heart. A heart attack is distinct from cardiac arrest. Heart failure, which is a sudden loss of heart function that usually occur as a result of electrical disturbance. Heart within when a sinusoidal SA node does not initiate any impulse, a heart attack can lead to cardiac arrest. Heart attack कोड़ा कोजे cardiac arrest कोड़ा कोजे ना. Heart attack is distinct from cardiac arrest. को ये रे हम जान से टाटा तो अलग बोली which is a sudden loss of heart function. Sudden loss है इंसे तो heart attack कोजे heart function that usually occur as a result of electrical disturbance हम body भीतर यदि होची और heart rhythm रे किसी छोटा disturbance होची. When SA node does not initiated any impulse or pulse देखोनी सेतबेले हम सेटा को heart attack होचे. Heart attack can lead to cardiac arrest. Heart attack जोगु cardiac arrest हुए, but the latter can also be caused by any other problem. Heart attack जोगु cardiac arrest न होइके other problem जोगु मध्य cardiac arrest हुए. ब्लॉकेज टाके हम हार्ट अटैक कहचे. स्पिग्मोमानोमीटर आम ब्लड प्रेशर मापुचे. देयर आर टू लिमिट्स ऑफ ब्लड प्रेशर बीपी, हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट. हायर लिमिट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. यहाँ मुझे कहती जो ऊपर देखला कि सिस्टोल डायस्टोल. सिस्टोलिक बीपी एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, व्हाइल लोअर जो पंपिंग जो बीपीटा आम चेक करचे सेटा सिस्टोलिक बीपी आ गोटे हूँ टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, व्हाइल लोअर द लिमिट द डायस्टोलिक बीपी एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल. बीपी इज 120 for 80 millimeter per of Hg. Pulmonary artery, the only artery which carries deoxygenated blood. Pulmonary artery carry करे deoxygenated blood. आ pulmonary vein carry करे oxygenated blood. ये मन रखते पड़ेगा. Okay, heart disease. Angina pectoris. It is chest pain or a discomfort that occur if an area of a heart muscle does not get enough oxygen-rich blood. Angina is not a disease; it's a symptom. It is heart of ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର disease ଗୁଡ଼ାକ. ଏଇଟା ଅଛି
এটা angina আমি কইছি is not a disease, it's a symptom of underlying heart problem. Angina usually is a symptom of coronary heart disease, CHD. Coronary heart disease is the most common type of heart disease in adult. It occurs if a waxy substance called plaque build up in the inner wall of the coronary artery. ଗୋଟେ waxy substanceଟେ ଯଦି deposit ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି CHD ଆମେ କହୁଛେ। এটা coronary heart disease. These arteries can oxygen rich blood to heart rich arteries can oxygen rich blood को carry करे. Angina may feel like pressure or squeezing in the chest. The pain also can occur in shoulder, arm, neck, jaw or back. Angina pain may even feel like indigestion. Indigestion भलिया मध्य feel हुए कराए. अच्छा. Another cause of heart disease is an anhypnia condition where the heartbeat irregularly, that is too quickly, tachycardia or too slowly, जोटा कि bradycardia. Symptom can include a fluttering feeling in the chest, racing heartbeat, slow heartbeat, chest pain or discomfort, shortness of breath, निश्वास प्रश्वास टे स्लो हो जाए, धई सही हो कथा कहला बेलू से सब ये गुड़ा सिम्पटम गुड़ाक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लाइटनेस, डिजीनेस, फेंट हो नियर फेंटिंग. Heart disease may also be caused by a problem a person is born with no congenital heart defect. Much of the advice to avoid heart disease is same health advice given for other conditions. Stop smoking, exercise, eat a diet that is low in cholesterol and salt. Cholesterol और salt ଟିକେ कम କରି ଖାଇବେ. कोलेस्ट्रॉल सॉरी लो फैट वाला खाद्य और सॉल्ट वाला खाद्य ଟିକେ कम करेंगे. कोलेस्ट्रॉल बीइंग द सोर्स ऑफ ब्लॉकेज. कोलेस्ट्रॉलटा अधिक है ब्लॉकेज कराए जोटा हार्ट डिजीज कार्डियक अरेस्ट कराए. सॉल्ट कंट्रीब्यूटिंग टू हायर ब्लड प्रेशर. सॉल्टा ब्लड प्रेशर भी बढ़ाए. अदर थिंग्स टू अवॉइड इन डाइट इंक्लूड saturated fat which typically come from animal fat and oil do fat टा अधिक आसे और animal fat रू, trans fat रू which occur in vegetable oil but have largely removed from the marketplace because of consumer demand. जो समय में ये ऑयल गुड़ा खाऊँ कि पाम ऑयल ये सब ऑयल गुड़ाक वेजिटेबल ऑयल गुड़ाक बेसी ता रहता है. Trans fat. Diabetes mellitus can increase heart disease risk by as much as 100%. Diabetes mellitus can increase heart disease. Diabetes जो heart disease बाहर है 100% जोड़ा कराए. Although higher level of glucose in the blood that are characterized by diabetes can leave fatty deposit in blood vessel which like cholesterol plaque can cause blockage of the heart. There are two types of cholesterol. The first LDL is called bad cholesterol because it is the type that can build up and block blood vessel. The other HDL is called good cholesterol because it is responsible for transporting LDL to the liver, ultimately removing it from the bloodstream. Surgical opinion can also treat heart disease. One of them is coronary angioplasty. In this procedure, a balloon is threaded into the affected blood vessel and inflated, pushing the plaque, blocking the artery to the side of the vessel. Sometimes this procedure is accompanied by placement of the stent mesh tube designed to hold the blood vessel open. तापर डिफरेंस बिटवीन एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कौन. द टर्म एंजियोप्लास्टी एंड एंजियोग्राफी आर मेडिकल टर्म्स दैट आर रेफर टू ए procedure related to blood vessel. These medical terms are often confused and used interchangeable by people that are not medical field as they seem similar in nature. Angiography is a process of taking a X-ray of blood vessel to see the vessel is
ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ଼। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ, ଏଇଟା ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲର ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି। ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ହେଉଛି ମେଥଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ୱାଇଡେନିଂ ଅଫ୍ ନ୍ୟାରୋଡ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟେରିୟଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସେଲକୁ ୱାଇଡେନିଂ କରାଯାଏ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି। In order to perform of an angioplasty, medical professional must first conduct angiography। ମାନେ angioplasty କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ angiography କରା ହୁଏ। ତ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେ ନାହିଁ।